Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So as you know that we're in the module called Selectors in Studio Deep Dive course, and this video we're going to be completing the module with some 10 good questions that can be asked in examinations and that can be pretty much asked in your interview. So these are pretty much important 10 questions that we always discuss in the end of the module. Let's get started guys. So let's take this. Okay. First question, when using the find children activity, what is the type of variable used to store the output? This is a pretty easy answer guys. मैंने आपको बता रखा है. That is the I enumerable of UI element. It is a type of enumerable वेरिएबल टाइप है ये आपका, इटरेटेबल है, तो इसको आप इटरेट कर सकते हो. ठीक है, इट इज नॉट एन एरे, इट इज ए टाइप ऑफ आई इन्यूमरेबल एरे भी होती है लेकिन वो यूआई एलिमेंट का अलग पार्ट होता है उसका. ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ आई इन्यूमरेबल ओवर देयर. सबमिट. We are 100% right. Okay. Which panel of the UI Explorer interface contains all the elements, UI elements of an open application? मीन्स इट इज आस्किंग जो भी मेरा यूआई एक्सप्लोरर का इंटरफेस है उसके अंदर जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं, यूआई एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ मिलेंगे, कौन से इंटरफेस है यूआई एक्सप्लोरर का वहाँ मिलते हैं. इज इट यूआई हायरार्की, यूआई फ्रेमवर्क्स, एडिट एट्रीब्यूट्स और आपका विजुअल ट्री. सो यू नो दैट गाइस, जितने भी यूआई एलिमेंट्स हैं ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन इट विल बी अवेलेबल ऑन विजुअल ट्री ओवर देयर, राइट. ओके, नेक्स्ट. Which one of the nodes of a selector is named the root node? अब root node क्या होता है? मीन्स जहां से मेरा पूरा का पूरा सेलेक्टर स्टार्ट हुआ है उसको हम कहेंगे रूट नोड. सेंटर लेवल नोड नो, लोएस्ट लेवल नोड करस्पॉन्डिंग टू जीयूआई एलिमेंट नो, हाईएस्ट लेवल नोड करस्पॉन्डिंग टू द एप्लीकेशन यस. तो जो एप्लीकेशन का रूट नोड है उसको हम कहते हैं रूट नोड. मैंने आपको बता रखा है काफी अच्छे से. Review question, which activity would you use to eliminate an unnecessary column in a data table? So this is a previous model question guys. I hope आपको remember होगा. तो हम जो use करते हैं that is remove from collection, sorry remove data column, not remove from collection, my bad. This is the activity in UiPath. मैं आपको दिखा भी देता हूँ. UiPath Studio. Okay, so we're at Studio guys. So let's see that remove data column. We have an activity. Do we also have an activity called delete column over there? Delete data column. It's remove data column and delete data column. It is also there. That specific activity I'm asking. Delete data column. No, there is no activity like this. So the right answer will be remove data column. Right? I hope that you got my point. Right? Okay. Right, and let's go next. Is the following selector web ctrl idx 143? अरे बाप रे 143 idx है. Okay. Tag image is a reliable selector for a dynamic page. So the answer I have to do it is in boolean type, true or false. Means it is asking that जो हमारे पास selector है web control idx 144. गाइस मैंने आपको बताया है idx तब यूज ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव करते हैं वहां से एंड उसकी जगह पे हमें एक एलिमेंट ऑटोमेटिकली इंक्लूड करता है आपका यूआई एक्सप्लोरर या यूआई पाथ कह सकते हैं. दैट इज द आईडीएक्स. इट करस्पॉन्ड्स टू द आईडी ऑफ दैट स्पेसिफिक यूआई एलिमेंट. हेयर आईडी इज स्पेसिफिक, मैं फिर से कह रहा हूँ स्पेसिफिक 144 है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इज अ रिलायबल सेलेक्टर फॉर अ डायनेमिक पेज. सो माई आंसर विल बी फॉल्स बिकॉज स्पेसिफिक कोई भी मैं नहीं रखूंगा अपने सेलेक्टर पे इफ वी आर डीलिंग विद अ डायनामिक पेज. What is a selector? The path to the UI element starting from the root all the way to the target element. Yes. Unique ID of UI element. Yes. Continuum UI elements. No.
activity used to select an element? No, big no. गाइस इन सब में से जो राइट आंसर दैट इज दिस, बिकॉज ये मुझे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर लग रहा है, इसने इस आंसर ने प्रॉपर अच्छे से हमें बताया है दैट व्हाट इज सेलेक्टर, द पाथ्स टू द यूआई एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट ऑल द वे टू द टारगेट एलिमेंट. दिस इज द राइट आंसर ओवर देयर. Submit and we are 100% right. What is the type of selector that is generated when you use a type into activity in a container activity? ये part बहुत important है यहाँ पे, container activity. So guys मैंने आपको बताया है that whenever any UI element activity is being generated inside a containerized activity, the selector that is being formed is always a partial selector. Right? We can't edit the top level of that specific selector. The right answer will be a partial selector. Okay, next. When fine-tuning a selector, how many characters does asterisk replace? Pretty simple answer, guys. 0 more. Okay. Ninth, second last. How can you improve the following calendar page selected to work for all the dates in 2020 but only 2020? मतलब हमें क्या 2020 में ही रखना है, 2020 के बाहर नहीं जाना है जो मेरे सेलेक्टर है, एंड वी आर गोना बी यूजिंग this selector to search all the dates in 2020 and only 2021, right? So it is showing week of May. So what we have to do, we have to make this part dynamic. So अगर मैं इस part को dynamic बनाना चाहता हूँ, so I just have to replace it with the help of asterisk. So यहाँ पे asterisk कहाँ पे लगा हुआ देंगे, UiPath hyphen calendar hyphen asterisk, ये ठीक है, ये मेरा right answer है, because यहाँ पे asterisk है पर यहाँ पे question mark है. ठीक है, 2020 कहा है, 2020 नहीं होता तो मैं ये भी ले सकता था, मैं ये भी ले सकता था, ये लेता वैसे बाय द वे, राइट? ये नहीं है, बिल्कुल नहीं, कम ऑन, दिस इज नॉट द आंसर, राइट? सो आई होप यू गेट माय पॉइंट. What's UI Explorer used for and how it can be helpful in the automation process? To explore the workflow tree. Guys, workflow tree explore करने के लिए नहीं होता है, right? To explore the UI tree, we can select multiple answers over there. UI Explorer is not a part of UiPath. Oh, come on. To create and fine-tune selectors. So guys, we have two answers over there and we are 100% right. And here we complete the 10 questions with 100% accuracy over there, guys. So I hope आप लोगों ने भी यही answers किए होंगे in your own machines, right? So let me quickly give you a quick sneak peek that which module we are going to be starting next, guys. So let's go to the learning plans and let's select our beloved professional training over there. And we were at selectors in studio deep dive, and let's see. Yeah, so it is a pretty important chapter, guys, in UiPath Studio called the debugging in Studio. आपने देखा होगा मैं बहुत बार लॉग मैसेज यूज करता हूँ, बहुत बार स्टेप इनटू यूज करता हूँ, स्टेप ओवर यूज करता हूँ, स्टेप आउट यूज करता हूँ. तो व्हाट आर ऑल दोज, वो सब क्या है, right? So they all come inside the debugging in Studio, guys. Pretty important chapter, important module, sorry, my bad. बट एट द सेम टाइम गाइज इसको हम जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे बिकॉज इसमें इतना कुछ होता नहीं है डिबगिंग में. इट जस्ट हैव टू, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ डिबग और टेस्टिंग योर वर्क फ्लो, राइट? आई होप यू गेट माई पॉइंट गाइज दैट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे. whenever we are running our workflow, so we always try to test it in debug mode so that whenever we run the workflow it should be running perfectly over there, right? Quickly start the module and यहाँ ब्रेक पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, हाउ टू टेस्ट अवर एक्टिविटीज, which are the three main sections in the watch immediate call stack panel. What is profile execution, we'll be also doing a quick practice over there. तो इसको हम फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे. It's not that much over there in this module, right? And after this, due to some reason it doesn't close by itself.
I don't know why. Doesn't. So after this, we will be the most important of the all will be yes. This is the star of the show, guys. Error and exception handling in the studio. Very, very important, module over there with all the try and the catch activities. GEH क्या होता है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, तो मैं आपको यहाँ पे इन डेप्थ करके बताऊंगा वीडियो में. एंड आपके पास काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हो. We will try to complete the course as soon as possible, but we will not skip anything. हम हर एक चीज लेके चलेंगे. ठीक है. आई जस्ट वॉन्ट यू कि मेरे चैनल पे आपको ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग का पूरा कोर्स मिलना ही चाहिए. वी विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग स्पेशलाइज्ड एआई कोर्स ओवर हेयर एज वेल. वी विल बी गोइंग बाय द बुक बाय द अकेडमी. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस कोर्स. प्लीज मेक श्योर टू वॉच द सीरीज इन स्टेप्स. ठीक है. ऐसे इफ यू सी द सीरीज 1 2 3 4 द वीडियोस दैट विल बी बेनिफिशियल. आई थिंक सो, बिकॉज जो स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स अपना यहाँ से स्क्रैच, दे नीड एवरीथिंग. ठीक है. तो दैट दिस वाज इट गाइस फॉर दिस स्मॉल इंफॉर्मेटिव एटॉमिक वीडियो. आई होप आपको समझ में आई होगी. इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Please support me guys as you are doing. Thank you so much for being here, and as always keep learning.